When people think alike, things happen. On the gracious summer day of 31st May, IIMC Jammu organized an educational trip for the students to the line of control in Pallanwala in Chum town and started its journey in due time. Packed in a bus, the team of 10 trainee journalists along with the faculty of IIMC Jammu started its trip to the line of control in Pallanwala in Chum town. Fun, enthusiasm and excitement. Sanjay sir was taking our class in the bus as well. As we departed from the main city of Jammu towards Akhnoor, we got the roads in very bad conditions, in which the construction work was also going on. Now we are in Akhnoor. Akhnoor is the same place, same town that speaks itself about the historical battle of 1971 that fought between India and Pakistan. Situated on the bank of River Chenab, decorated by nature and greenery, the beautiful Akhnoor town and the most significant town of the 1971 war as well, because the purpose of the Pakistani army was to capture this town. We are above the same road in which the Pakistani army came here during the 1971 war to conquer Akhnoor. The trip took a mini stop in Chakbadialan. Students quenched their thirst with sugarcane juice, making themselves comfortable for the summer heat. Fun was an inseparable part of the trip. Students played among themselves, making the moment lighter for everyone.
on those villages which are completely evacuated during firing. At such times, these villagers shift to the refugee camps in Akhnoor. As soon as we reached Kachriya, the army vehicle came to lead us on the way ahead. Then following that army vehicle, we also started our journey towards our destination. The army welcomed those faculty and students with warm reception. Located just meters away from the LoC, it was a thrilling experience for the students. By the Prime Ministers of India and Pakistan, Mrs. Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. The forward line between troops of India and Pakistan at the time of ceasefire became line of control. Pakistan stood dismembered and humiliated as Bangladesh became a reality. It was one of the shortest but fiercest military conflicts in the history, lasting just 13 days. India lost around 1,200 heroic and brave sons, while Pakistan suffered 2,100 casualties, far more than those suffered in any theatre, and caused destruction. The glorious actions brought victory to India and most unceremonious defeat to Pakistan in the history of its existence. दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ, दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मन हिंद की। है मजाल कि एक इंच भी ले जाए तू मेरी सरहद का, तू ले जा जितने चाहे सर मेरे,
मैं सरहद के लिए पूरा कारवां लिए बैठा हूँ। Students were shown a movie about Battle of Chamb, voiced Vice Commanding Officer Gaurav. Battle of Chamb was a heroic movie made on the real war that took place between India and Pakistan. From there, the students were taken to the Raja viewpoint. Students were familiarized with bunkers, After covering the distance of 66 kilometers, the party reached the line of control in Chamb area. फौज हो या टेररिस्ट, हर आदमी इसको ले जाना पसंद करता है। अगर आज मैं जाऊंगा ऑपरेशन में रात को, तो मुझे अगर पिक करना होगा बियॉन्ड डाउट आई विल पिक एक। But this has a 300 only. As compared to that. माइनर चेंजेस बट वेरी वेरी रिलायबल। पानी में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, निकालो और फायर करो, कोई रोक नहीं। एक्सेलेंट वेपन मेड, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट मेटलर्जी। So we are producing in India now. अब इसके लिए चल रहा है वो AK-203 का। So अभी देखते हैं विद दिस वॉर हैपनिंग इन रशिया। MP9 मेड इन स्विट्जरलैंड, रेंज 50 मीटर। 7.62 mm लाइट मशीन गन मेड इन इंडिया, रेंज 500 मीटर। 7.62 mm निगेव LMG मेड इन इजराइल, रेंज 800 मीटर। अगेन इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत एक और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में हथियार हमने रिसेंटली लिया इंडियन गवर्नमेंट टू फेज दिस आउट। सो दिस इज अ इजरायली LMG, अगेन दुनिया की बेहतरीन LMGs में से एक। इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने इसको बनाया और अभी रिसेंटली इसको प्रोक्योर करके जस्ट पहुंचे हैं। एक्चुअली इसका प्रॉपर एमिनेशन अभी आया नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए थोड़ा बहुत एमिनेशन आया, जो इंडिया में ही बना रहे हैं एमिनेशन। दिस इज द न्यू LMG, वेरी फाइन LMG। 7.62 mm ड्रैगो स्नाइपर राइफल, कारगर रेंज 1200 मीटर, मेड इन रशिया। G42 मेड इन फिनलैंड, कारगर रेंज 1200 मीटर। ये तीसरा वो हथियार है जो मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। पहले ये ड्रैगनॉव स्नाइपर थी, रशियन स्नाइपर राइफल। या इस हथियार को आए हुए 25 से 30 साल हो चुके हैं। सो अभी फिनलैंड से एक बहुत बढ़िया स्नाइपर राइफल हमने लिया है। 5 वेपन्स पसंद कीजिए और गवर्नमेंट को बताइए हमें इनमें से कोई एक ले दीजिए। तो बेस्ड ऑन कितना पैसा आपको अलॉट हो रहा है, रक्षा मंत्री का कितना पावर है, आपको अलॉट हो जाता है। सो इसी के अंतर्गत हमें वो 6 hour राइफल नेगेव और एक और वर्ल्ड्स बेस्ट स्नाइपर राइफल हमें मिला। Assault rifle. Test purpose.
whether these are No, these are not they have been procured in some quantity. after अच्छा असॉल्ट राइफल असॉल्ट के लिए है, गुत्तम गुत्ता की लड़ाई के लिए है। स्नाइपर राइफल एक वीआईपी को टारगेट करने के लिए दूर से। सो इसका रेंज है 1000, 1200, 1500 मीटर। सो एक सिंगल शॉट फायर कीजिएगा और हेड शॉट लेके डाउन कीजिएगा। उसकी 50 गोली और इसकी एक गोली का जो महत्व है वो अलग है। थर्ड, इससे 13 प्रकार का अन्वेषण फायर किया जाता है और स्वीडन का बना हुआ है। So range? रेंज इससे हर अन्वेषण का अलग अलग रेंज है। टैंक की वर्कलॉप तक। स्टैटिक टैंक के लिए 700 मीटर तक हम इसको इफेक्टिव है और मूवेबल है तो 500 मीटर। आगे बता, दोनों तरह से कर सकते हैं इसको। जैसे कोई इंसानी टारगेट है उसको हम 1300 मीटर तक बर्बाद कर सकते हैं और इल जो रात के समय में इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको हम 2100 मीटर तक इल्यूमिनेशन कर सकते हैं इलाके को। और स्मोक हम इसके 1300 मीटर तक स्मोक स्क्रीन बना सकते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ये रॉकेट लॉन्चर इतनी आवाज करता है कि अगर एक राउंड आपने फायर किया तो 3 दिन घंटी बजती है कान में। एंड आई एम नॉट किडिंग। और इसके पीछे से बैक ब्लास्ट भी निकलता है। तो गोला आगे तो जा ही रहा है दुश्मन की तरफ, बट क्योंकि वो इतने पावरफुल एक्सप्लोसिव है कि पीछे बैक ब्लास्ट निकलता है 15 मीटर की दूरी पे। सो एनीबडी स्टैंडिंग बिहाइंड also can get accidentally hurt. So we have to take care when 47 मीटर लंबा निकलता है पीछे की साइड में। So even someone standing behind will also die if he's standing in the especially ear part। तो ये इनको तो वो ये रेंज क्या है इसका? इसका 50 मीटर से लेके 375 मीटर तक फायर कर सकते हैं। 6 प्रकार का अन्वेषण फायर कर सकते हैं इसे। क्या बोलते क्या इसको? 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर। ये ग्रेनेड लॉन्चर है बेसिकली। जी सर। जी सर। रॉकेट बड़ा और ग्रेनेड छोटा। 7.62 mm मीडियम मशीन गन, रेंज 1800 मीटर, मेड इन इंडिया। Students were familiarized with army weapons, bunkers, and there was a display of gun shootings that students really enjoyed. firing of 4 rockets. First is 5.56 इंसास है। ठीक है, लेंस देख रहा था गंदा नहीं। राम साहब, श्रीमान फायर शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। राम साहब, आराम से। डिटेल एडवांस, गेट के पोजीशन। This is a common procedure of firing. 8 फीट नंबर अप। सो लेफ्ट से राइट LMG है, लाइट मशीन गन, फिर इंसास राइफल, फिर नया 6 ऑवर राइफल और सबसे राइट में AK। Okay. पर एडवांस। डिटेल भर। रेडी? नंबर 1 13 2 3 4 नंबर 1 फायर। नंबर 3 फायर। नंबर 4 फायर। ऑल नंबर अपने समय में फायर। डिटेल खाली कर।
निरीक्षण के लिए जांच है Not only just to show the चेक रिपोर्ट firing of these weapons, the procedure also. हर हथियार को फायर करने का तरीका अलग है। तो लाइट मशीन गन क्योंकि वो थोड़ा हैवी कैलिबर है, झटका थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका पोजीशन अलग है, तो उसमें हम लेग्स ज्वाइन करके जनरली फायर करते हैं। और राइफल में हम कंधे पे रख के थोड़ा स्लांट पोजीशन में फायर करते हैं। You are trained physically and mentally in a manner where you are able to adapt into any kind of situation. Let it be happy situation, let it be worse situation. So we are mentally and physically both ways we are trained for that. That is one. Now whenever there is a war scenario, everybody goes with that mindset कि we are going to fight with the enemy, so result may be any. ठीक है, तो we go with positive note कि I छोड़ूंगा नहीं, we go with that, है ना, we go with lot of war cries, lot of josh, and जो टीम होता है वी पेप अप ईच अदर। सो आपने सुना होगा पल्टन्स का वॉर क्राई, मस्ट हैव हर्ड इन दैट मूवीज आल्सो, देयर इज अ वॉर क्राई। वॉर क्राई इज बेसिकली इट इज अ स्लोगन टू रेज द मोरल ऑफ ऑल रैंक्स। इट इज नॉट ओनली सोल्जर्स, इट इज ऑल रैंक्स, ऑफिसर्स, JCOs, then jawans. It is to raise the morale of all the soldiers. Now with that war cry, different kind of energy which comes up, and you literally operate differently. ठीक है, and more so you are already trained for that. War cry is just that final kind of josh which is packed into you, and then you face the war scenario. Whenever you are going there, we are generally teammates. We never operate alone. It is always teamwork. There is never any situation when a soldier is operating alone. You must have seen in many places there is somebody else. Just even in firing you saw there is a buddy. So it is training. We are together. Anybody coming into J&K, anybody going into Northeast, they are supposed to frequently get into encounters with terrorists or Ulfa there. So they are primarily trained before occupying their post or before taking on their duties. They are given specific training to that related to that area. They are told what kind of terrorists, how they operate, their basic strategies, how the terrorists operate, all those things. So training is that is the prime pillar which we focus on, and we always consider that is the best filter. Training is the best filter, and rest is all human kind of requirement. But for media, what it is, 3 soldiers killed in so and so. Yesterday, 1 officer suffered injuries in my blast. So that is a different kind of reporting gives a different impact to masses and different impact to the services establishment. So that is one. Second is authenticity. Now, at times, suppose anything happening along these areas, people are so eager. People are jumping to report it only as bat action. Have you heard of bat action? No. It is a border action team. It is a small team which comes from across, and then they damage that small post, or at times people have been at times they have been beheaded also. They carry their remains also at times. So it is that. So basically to cut out that. After all the showcasing of the various aspects of a soldier's life, there was lunch organized for the team by the army, which all of us really enjoyed. If Indian Army did not stop the Pakistani Army at that time with its ability and understanding, then today this place would also be a part of Pakistani occupied Kashmir.
In altogether, it was a really enjoyable trip for the students and the faculty. Both the students and the faculty learned quite a lot about the struggles of a soldier to protect the line of control. So it is all about our today's LoC trip. It was really wonderful and unforgettable moment for us. Actually, on that time they were not allowing us to capture or to do photo shoot. So now I'm explaining you about that time. We learned lot of things. We learned about LoC. We get a new information about LoC and their user, and we learned lot of things. In fact, we have done firing also. So I want to give my all thanks to IMC Jammu and the whole army team. Thank you. The trip was organized with the sole purpose of giving students a rich first-hand experience to defense reporting.